हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज अगेन भी हम एक और आईपीएल टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी कंटिन्यू विद अ प्रीव्यू सेक्शन फॉर सेगमेंट फॉर आईपीएल टीम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टीम जिनमें जिसके पास एक प्लेयर है जो कि रिटायरमेंट होम में होना चाहिए था, इंटरनेशनल प्लेयर। एक और इंटरनेशनल प्लेयर है जो एक ही टांग पे खेलता है और जिनके पास करीब 15 मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। कैप्टन जो पिछले साल था, वो दिल्ली का कैप्टन रह चुका है। टीम उसने इसलिए छोड़ दी थी दिल्ली की क्योंकि कोई और कैप्टन बन गया। अब असली कैप्टन वापस आ गया, तो इस साल ये क्या करेंगे पता नहीं आईपीएल में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स किक ऑफ द डिस्कशन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। सो आपने आपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक चीज मिस कर दी कि 2 टाइम आईपीएल चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स। so Two and time IPL champions a decade ago. Doesn't matter. 2 time is 2014 2 time, was the last right? time when Kolkata won. But अच्छा, even so after that, they basically got to playoffs 3 times, 3 to 4 times. और एक और चीज जो हमने मिस कर दी है, इस टीम को मैनेज करने के लिए वापस आए हैं गौतम गंभीर, द मोस्ट वॉलेटाइल कंफ्यूज्ड पर्सन जो कि The हर same चीज person में who won KKR IPL titles. यही मानते हैं कि इनका क्रेडिट कोई और ना खा जाए। so this is going to Maybe, be a fun edition. So right. as you all know, we have Saurabh and Vasu with us. Saurabh कि ये सौरभ की टीम है प्रॉपर्ली केकेआर, Yeah. उन्होंने लिखा भी है अपने नाम में। एंड देन वी हैव वासु, जो कि अपने आप को इंडियन क्रिकेट टीम का फैन बताते हैं लेकिन मूड के हिसाब से आईपीएल टीम सेलेक्ट करते हैं। प्रेडोमिनेंटली शुरू होता है हमेशा प्रीति जिंटा के साथ, मतलब पंजाब के साथ। एंड देन उस सीजन में जो चल रहा है उसके माहौल के हिसाब से वो बहते हुए पहुंच जाते हैं वहां पे। सो वी विल किक दिस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग कि हुआ क्या था आईपीएल ऑक्शन में, and you know what is, and then we'll of course conclude with probable 11. Right. So this is the squad overall. I'll let Saurabh to start because ये इनकी टीम है, and then we'll go to Vasu. I guess KKR ने अपने सारे गैप्स फिल करे इस ऑक्शन में जो थे पहले के सीजन्स में. दे गॉट अ गुड पेस अटैक नाउ, जो मिसिंग था पहले कि भाई बॉलिंग कौन करेगा. कभी प्रसिद्ध कृष्णा करते थे, कभी मावी करते थे, कभी नागरकोटी आते थे. तो इस बार वो सारे चीजें फुलफिल करके दे गॉट गुड सीमर्स इन. दे गॉट the I guess the most expensive player of IPL history, Mitchell Starc this time. So all in all a good auction I would say. वो replacements भी अच्छे लेके आए हैं जो foreign players के होने चाहिए थे. Apart from that, they got a couple of decent Indian batters in the side too, as a replacement of already the settled players in the squad. भाई मुझे तो ये लगता है कि ऑक्शन स्ट्रैटेजी में कोलकाता फेल्ड टेरिबली द वे दे वेंट इनटू द ऑक्शन बिकॉज they went bonkers for Mitchell Starc and they were left with no purse. बाकी पूरे ऑक्शन में वो बैठ के वहां पर बादाम और बिस्किट ही खा रहे थे, उन्होंने कुछ किया नहीं वहां पे. तो ऑक्शन स्ट्रैटेजी की बात करूं, हाँ, दे एक्वायर्ड अ वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर चलो I'll इन tell द you. मिचेल स्टार्क, बट उसके बाद जो पर्स बचा नहीं तो फिर दे हैड टू गो फॉर द लोकल टैलेंट व्हिच दे स्काउटेड. See, one thing that we need to watch out is edition IPL में for KKR specifically, one player or rather not player, we should be watching at the clock. शाकिब उल हसन टीम में है तो हमेशा वो घड़ी देखते रहेंगे कि किसको आउट करवा दे किसी तरीके से। नहीं है. नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं. साकिब Oh, साकिब Shakib हुसैन is they in are there. supposed to be most, he is not there. Oh, I thought Shakib ul, my bad. Then एक और player then that we have to look at and who could be the game changer जिस तरीके से उनको टीम में लिया गया है, केएस भरत. Uh, so is he going to be your wicket keeper for the tournament? नो, ही इज अ रिप्लेसमेंट कीपर. अगर गुरबाज का सीजन अच्छा नहीं जाता है तो केएस भरत एज अ इंडियन प्लेयर विकेट कीपिंग करेंगे. और जैसे अभी जेसन रॉय पहले लिया था पर जेसन रॉय ऑप्टेड आउट, तो अभी फिल सॉल्ट रिप्लेसमेंट आ गए हैं. सो फिल सॉल्ट वुड कम इन एंड ओपन in place of Gurbaz and KS Bharat would do the keeping.
हाँ, तो मतलब स्ट्रैटेजिकली अगर हम टीम देखें तो बहुत ही वेल बिल्ड टीम है। मतलब जो वासु कह रहे थे वो पार्शली सही भी है पर नहीं भी है। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज मुजीबुर रहमान का टीम में आना, बिकॉज वी डोंट नो हाउ दिस सीजन वुड बी फॉर सुनील नारायण। इफ सुनील नारायण डजंट प्ले वेल, देयर इज अ रिप्लेसमेंट फॉर सुनील नारायण। अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है हर प्लेयर का यहाँ पर। मुजीब बाय आ द वे, जाएंगे। हाउ ओल्ड इज सुनील नारायण नाउ? आपके पास तीन मिस्ट्री स्पिनर है। सुनील नारायण से आप मुजीबुर रहमान भी कर सकते हो, या मुजीबुर रहमान की जगह वरुण चक्रवर्ती भी ले सकते हो, हु इज वरुण आल्सो चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर। और आप एक ओवरसीज बैट्स, तो मे बी अगर फिल सॉल्ट आ रहा है to cover up your opening position, because honestly speaking I feel इस समय the problem, you said that you covered up your fast bowling attack with Mitchell Starc, but it's only Mitchell Starc. Then you नहीं। are dependent on, the local talent, and then the mystery spin of Shreyas Sharma, Sunil Narayan, Mujib if required, और वरुण चक्रवर्ती इफ रिक्वायर्ड। बिकॉज देखो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती विल बी पार्ट ऑफ योर प्लेइंग 11, और शायद सुनील नारायण भी रहेंगे। But who बिकॉज is the second? Sorry to interrupt you, but who is the second fast bowler? So I'll tell you there are two. या It will देयर be इज हर्षित Chetan राणा हु Chhabria, डिड गुड फॉर देम लास्ट सीजन। पर इस बार खेलेंगे वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा के बहुत अच्छा सीजन निकला है ये रणजी में, T20 सैयद मुश्ताक में। ही प्लेड फॉर हिमाचल। और अगर आप रीसेंट लास्ट मतलब इसी 2024 में देखेंगे तो 3 मैच में 15 विकेट से ज्यादा है इनके, जो कि बहुत एंड अच्छा स्कोर है। और करंट एंड फॉर्म में चल रहे हैं वैभव अरोड़ा। फ्रॉम ही प्लेज फ्रॉम हिमाचल। एंड एंड हर्षित देन यू राणा, हैव अ लेफ्ट, आर्म ऑप्शन ऑफ चेतन चेतन साथिया। सकारिया as well. So that option is there. So they have their seamers covered. What I was trying to say is, Kolkata predominantly in IPL has gone with a lot of spin focus. I don't know the home ground. अगर मैं internationals की बात करूं, it supports seamers a lot. बट आईपीएल में कोलकाता ने हमेशा सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, पहले पीयूष चावला होते थे कोलकाता में। सो इस तरह से दे हैव ऑलवेज बीन। तो मेरे को तो लगता है कि जो कॉम्बिनेशन इनका होगा वो बॉलिंग में चलो ठीक ठाक। वैभव हैड अ गुड सीजन, हर्षित राणा पिछले साल ही परफॉर्म डिसेंटली, चेतन सकारिया हैज परफॉर्म डिसेंटली फॉर राजस्थान कपल ऑफ सीजंस बैक। सो बॉलिंग फिर भी चलो ठीक है, वो डिपेंड करता है, T20 फॉर्मेट है, बॉलर्स वैसे भी डिसाइड करते हैं काइंड ऑफ। चल गए तो आपकी टीम निकल जाएगी, नहीं चले तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल इनके बॉलर्स ने एक टीम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, से फॉर एग्जांपल फॉर 150 रन्स, उसके बाद 150 को चेस करने के लिए आपके पास बैट्समैन के ऑप्शंस क्या है, इज व्हाट आई वुड लाइक टू नो। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत वेल बैलेंस्ड है। इंडियन बैटर्स भी हैं और फॉरेन बैटर्स भी हैं इस टीम में। इंडियन बैटर्स में आपके पास नीतीश राणा, रिंकू, श्रेयस, जो इंडियन टीम के लिए भी रहते हैं। मतलब रिंकू, श्रेयस इंडियन टीम प्लेयर्स, ठीक है। नीतीश राणा भी ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू द टीम है, ठीक है। ये 3 तो इंडियन बैटर हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के लिए अच्छा खेलते हैं, ठीक है। फिर फिल सॉल्ट है, जिनका अगर आप 100 देखें या बीबीएल देखें तो अच्छे सीजन्स रहे हैं लास्ट कुछ 2-3 सीजन, बट ठीक फिल है। सॉल्ट आपके प्लेइंग 11 में आ नहीं सकते ना, अगर क्योंकि आप 4 रहमानुल्लाह ओवरसीज खिला पाओगे। अगर रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं चलते हैं तो ऑप्शन की हम्म। तरफ फिल सॉल्ट आते हैं, ठीक है। फिर आंद्रे और रसल तब है। और तब आप केएस भरत को कीपर के तौर पे हाँ, लेके आओ। राइट। केएस भरत भी डिसेंट बैट्समैन है, मैं ये नहीं कह रहा खराब बैट्समैन है। हमने देखा कितने रीसेंट है। See, by the end of the day, it is a decent, well balanced squad with Manish Pandey into Indian batsman की तरह. Venkatesh Iyer also bats well. So you have all in players. सी वेंकटेश अय्यर से शुरू करता हूं मैं, बैट्समैन। Hmm. आप 2 साल पहले आपके फाइन थे वेंकटेश अय्यर, ही परफॉर्म गुड, यू गाइस रीच द फाइनल्स 2 साल पहले, Yes, yes. एंड इवेंचुअली लॉस्ट इट। Hmm. लास्ट सीजन ऑफ वेंकटेश अय्यर वाज पुअर, सो वो Extremely. एक नाम रह गया अब। Hmm. ठीक है, रेमनला गुरबाज इज अ गुड प्लेयर फॉर अफगानिस्तान, ही हैज टर्न डिसेंटली फॉर व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज ही हैज गॉट इन आईपीएल अभी तक। सो Hmm. यस, ही कैन बी बैंक्ड अपॉन।
Coming to your captain Shreyas Iyer, he's been extremely poor form of late, and you are saying you're relying on him. But I think Of course, he probably would good. Let's consider he probably will come good. yeah. Yeah. Then coming to one of the key players who captained you last year, Nitish Rana. Okay, again, it's a hit and miss kind of a player. So He is. and नहीं, अभी then अभी you कहाँ come to पर? your most consistent player. Then you हाँ, come to रिंकू your सिंह। most consistent player, which is Rinku Singh, who will bat at 6. तो हम्म, मतलब जो जो मेरे को ये स्क्वाड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम ऊपर में हमारे विकेट गिरेंगे और लास्ट में शायद रिंकू आके हमारा नैया पार लगा देंगे. And also the combination is such कि फिर से सुनील नारायण के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. उस सुनील नारायण से ओपनिंग करवाएंगे या फिर फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन उनको इम्पैक्ट की तरह लेके आएंगे. दिस इज हाउ केकेआर हैज हाँ, लार्जली ठीक। फंक्शनड. एंड सुनील नारायण मेरे ख्याल से अब करीब 60 साल के हो गए होंगे. उनका बच्चा भी, उनका बेटा भी आने वाला होगा टीम में. एंड द सेकंड ओवर डिपेंडेंसी इज ऑन एंड्रे रसल. एंड जैसे मैंने शुरुआत में बोला, एक ही टांग पे खेलते हैं. इसका हाँ, मतलब एक्चुअली नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंट इंजरीज he has lately, of course, he has done well. I think Dubai में एक जब जो recent हाँ, league हुआ, he was really he did very well. और फिटनेस भी इम्प्रूव करा है, जो दिख रहा है वो अभी हर तक। साल करते हैं, पहले 2 मैचेस के लिए रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है. हाँ, लेकिन that's the कंक्लूजन अगर मैं बात करूं ना, तो बैंकेबल प्लेयर अगर हम बोल सके ना कि एक टीम में जैसे वी वर डिस्कसिंग दिल्ली कैपिटल्स फ्यू वीक्स अगो, सो वी सेड डेविड वार्नर इज अ बैंकेबल प्लेयर. ठीक है, उस तरह से somebody you can give a start. आपके पास बैंकेबल प्लेयर के नाम पे रिंकू सिंह है जो 6 नंबर पे खेलने आएंगे. अब उनको नहीं, आप कितने ऐसा नहीं बॉल्स है, दोगे कि आई वो आपको एग्री। मैच जिता दे, वो देखना पड़ेगा. नहीं, नहीं, आप अभी भी गलत जा रहे हो। बैंकेबल प्लेयर्स में यू हैव नीतीश राणा, आप उनके लास्ट 5 सीज़न देख सकते हो, 4-5 सीज़न जो वो केकेआर से खेले हैं, वही एवरेज 400 साढ़े 400 रन बनाते हैं नीतीश राणा। श्रेयस अय्यर एक अच्छे प्लेयर हैं, आप बस ये 3 इनिंग अच्छी नहीं गई या थोड़ा-सा अभी नहीं चल रहा है फॉर्म, बट ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे बैंकेबल प्लेयर्स में से, मतलब ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर टीम, ठीक है? आई होप ही परफॉर्म्स गुड. हाँ, और उसके अलावा अगर आप देखें तो वेंकटेश अय्यर का रीसेंट फॉर्म अच्छा रहा है डोमेस्टिक सर्किट में, ठीक है? सो ऐसा नहीं है, इस टीम का अभी तक का सबसे हाई ये है कि इनके इस टीम में जो 5-6 प्लेयर हैं इंडियन, उनका डोमेस्टिक सर्किट बहुत अच्छे निकले हैं इस साल के। नहीं, मैं आपको यही सॉरी आई करेक्ट यू हियर. जैसे आपने डोमेस्टिक सर्किट की बात की ना, हुँ, तो नितिश सॉरी वेंकटेश अय्यर वाज प्लेइंग domestic. He was playing Ranji for Madhya Pradesh, हाँ, and he did not perform good in Ranji at least. I'm not sure about Syed Mushtaq Ali. हुँ, Coming to the other player that you were talking about, I'm sorry, I'm missing his name, which is वैभव Shreyas Iyer, अग्रवाल। who is your captain. Shreyas Iyer was dropped from the Indian cricket team. हुँ, He was snubbed from the contracts. He that's a decided to that's go and play Ranji. because of the test games. That's okay. क्योंकि one day में Shreyas Iyer has done well, so See, he one has day struggled was again in again. One T20. day I was five agree. months back. One day was 5 months No, back. so yeah, I'm agreeing with you. I'm saying he has Hmm. struggled in T20, done well in one day, struggled again in test matches. So again, your point, what you're saying, hit and miss, and his career has in IPL has been like that, hit and miss. राइट। Consistency kabhi nahi rahi hai. He has been made captain for Delhi. He So didn't perform well then as well. He's been captain for KKR. Haven't seen anything of similar success, kind of successful year with from him for KKR as well. no, so again, as I said, see the problem. I don't have a problem with the potential that a player like Shreyas Iyer has. He has been a good player. He has performed well. But off late, if you're saying he's a bankable player for KKR, this is where I have slight doubts. And this is again what He has to मैं prove himself. करता हूँ. मैं हाँ, feel करता हूँ कि recent form is not supporting him. So he will go into IPL with a different kind of pressure जहां उसको ये भी नहीं पता होगा कि whether he will be getting selected for the T20 World Cup. So it can work I as a don't think he positive will. for him. I don't हाँ, think it he can will. work as a positive for him. It can work as a negative. क्या पता वो इसी challenge को लेके he will go ahead and outperform. हाँ, But हो if सकता
नो डाउट। आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछो तो आई विल से ही इज नॉट अ बैंकेबल प्लेयर, ही डज नॉट लुक लाइक अ बैंकेबल प्लेयर फॉर मी फॉर He's केकेआर इन not going दिस to सीजन. get selected for T20 World Cup. There's एग्जैक्टली, very slim chance. There has to be हाँ, a host of injuries before he's considered. एग्जैक्टली. या तो उसका ये सीजन आज तक का बेस्ट सीजन निकले, मतलब, और वो केकेआर को मतलब ऑन हाई नोट क्लोज करवाए, तब जाके मुझे लगता है कि देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। ये बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे आरसीबी कहती है हर साल ई साला कप नाम दे। ये सीजन इनका सबसे बेस्ट सीजन जाएगा। हो सकता हमारा तो भाई कोरबो लोरबो जीतबो है भाई। है। Okay, so let's look at the playing 11. But before we look at the playing 11, I have a couple of questions. जो आपकी टीम में है, ये रदरफोर्ड, what does शेन he do? And शेन then रैशफोर्ड Atkinson, रिप्लेसमेंट है आंद्रे रसल का हिटिंग के लिए। अच्छा, He's a यस। and Atkinson, गस एटकिंसन की जगह अभी आ गए हैं दुष्यंत चमीरा, जो कि मिचेल स्टार्क के रिप्लेसमेंट होंगे अगर मिचेल स्टार्क नहीं होते हैं तो। hang on, what? Mitchell Starc is playing, right? अभी तक ही इज प्लेइंग, व्हाट इफ ही गेट्स इंजर्ड, तो अच्छा, उसका रिप्लेसमेंट इज दुष्यंत Amira. चमीरा। So what if an Indian batsman gets injured and they get a overseas batsman like Rutherford filling in the shoes, and they may want to replace a bowler, Indian bowler with दुष्मंता चमीरा, तो वो भी एक ऑप्शन बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है इसमें. मतलब Okay. कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिकॉज बॉलिंग लाइनअप में 3 स्पिनर्स होने हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आ सकते हैं सुयश शर्मा, ठीक है, देन वरुण चक्रवर्ती विल स्टार्ट एंड सुनील नारायण वुड स्टार्ट। सो Okay, so उधर let's look at the probable 11 then, since we are already discussing that. So, Saurav, you want to walk us through with this? yes, it would be Shreyas Iyer as captain, then Gurbaz would open, और And वो he will open, open with Iyer. yes, he'll open up with Iyer, then Nitish Or Iyer Shreyas and Iyer, Gurbaz are going to open. Is that what you're saying? yes, Venkatesh Iyer. Oh, Venkatesh Iyer. Venkatesh Okay. Iyer, I'm and Gurbaz confused. will open. Along with that, one down आएंगे Shreyas Iyer, then it would be Nitish Rana, then it would be Rinku Singh, Andre Russell, and then followed on by the bowlers. Hmm. So So if basically, Bowling you're looks a little, banking on bowling थोड़ा 6. सा off लग रहा है मुझे. I don't know. Vasu, what do you think? मैं सी वही मतलब ऑफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मैं इस टीम का प्रोबेबल 11 समझ पा रहा हूँ फ्रॉम अ केकेआर फैन, तो मुझे ये लग रहा है कि इट्स सी दे आर मिसिंग ऑलराउंडर्स. वी कैन नॉट कंसीडर आंद्रे रसेल एज एन ऑलराउंडर टुडे, बिकॉज वो अगर Andre दो दो मैच में ओवर अगर 2 ओवर भी ले डाल दिया लेता है, उन्होंने, अगर 2 मैच में 2 ओवर भी डाल दिया तो फिर उसके बाद इंजर्ड हो जाएंगे. नहीं सेम पर गोज फॉर प्रॉब्लम वेंकटेश नहीं अय्यर. है ना। आंद्रे रसल का अगर आप देखते हैं, तो आंद्रे रसल जब जब बॉलिंग करने आते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखें, तो वो Injured हो जाते एक विकेट लेके जाते हैं। हैं। नहीं, हाँ, ऐसा ही इज अ नहीं विकेट टेकर, ही इज अ विकेट you टेकर, are बट saying that आंद्रे रसल जब भी bowling करने आते हैं इंजर्ड हो जाते हैं. इंजर्ड ऐसे नहीं होंगे। So don't worry about the injuries, वो Okay. कवर अप हो जाएगा। हाउएवर ये जो प्लेइंग 11 है, इसमें चेतन साकरे, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा में रोटेट होता रहेगा। तीनों को राइट. अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कोई भी 2 लोग आएंगे। I think we have overshot the time, so I'd like to quickly, uh, close by asking you, where do you think this team finishes in the? Sort of, you will go. You can go. You Playoff, can go first. In the IPL, where do you think where they're going to finish? they'll go to playoffs. Okay, Vasu. Well, they are going to finish in bottom half once again. They are not going into playoff with the kind of combination that have they have at this point of time. I would love them to surprise me and reach playoff, but Yes. not. I don't think so. It's going to happen in 2024 for sure. बट मेरे हिसाब से वासु, जो आप बोल रहे हो ना, जो बॉटम हाफ में जब रहेंगे, तो ऐसे हो सकता है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कि मे बी 5th 6th पे क्लोज कर सकते हैं, बहुत नियर टू प्लेऑफ्स, उससे नीचे नहीं जाएंगे। So सातवें पे भी I कैसे would like to conclude by saying that they might finish between fourth to seventh. Um, it would be very disappointing year for them if they finish lower than seventh. And it will be an overachievement if they finish above fourth.
So yeah, with that, I would like to conclude today's discussion. Thank you, Saurabh, and thank you, Vasu. Um, and hopefully your team does well. Maybe they'll surprise us, or they will shock you. So good luck with that. um, all right, then. See you again tomorrow with another video for another team. Okay, great. Yeah, guys, thank Bye. you.